discussing with you that in the first part of my lecture, I discussed with you who and why the vulnerable groups. And in this part 2, I will discuss the human rights, that what human rights they have, these vulnerable groups have, and who is going to protect their rights. उनके rights क्या हैं नंबर 1, और उनके rights को protect कौन करेगा. So on the basis of my first lecture, broadly you see that there were 3 different kinds of the constructs or category in which we can put the vulnerable groups. 3 जो हम broad categories को लेके चल सकते हैं. And these categories are because of their multiple vulnerability, which I told you that we cannot put in the watertight compartment, or we cannot make a demarcation that this category is belonging to a one group or the other group, but there is overlapping also. So the first construct which we can put is here physical construct. Physical construct in which we can put the age-based vulnerable, चाहे वो उसमें children हो या फिर उसमें aged person हो. इसी physical construct में जो दूसरा group हम रख सकते हैं वो है diseased and stigma based हो सकता है कि bodily infirmity की वजह से जो HIV और positive लोग हैं या disabled लोग हैं उनको हम इस category में रख सकते हैं. ये physical based पर है. तो फिजिकली जो हमारा पहला एरिया हो सकता है, ग्रुप हो सकता है वल्नरेबिलिटी का, उसमें एज बेस्ड हो सकता है, डिसीज बेस्ड हो सकता है, स्टिग्मा बेस्ड हो सकता है. दूसरा हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट जिसमें हम रख सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप में जेंडर बेस के आधार पर, चाहे वो विमेन हो या फिर LGBTQ सेक्सुअल माइनॉरिटीज हो, उनको हम रख सकते हैं. या इसी सोशल कंस्ट्रक्ट में हम कास्ट बेस्ड वल्नरेबल ग्रुप्स को भी रख सकते हैं, जिसमें SCs हो सकते हैं, STs हो सकते हैं. इसके बाद जो तीसरा हमारा ब्रॉड ग्रुप हो सकता है वल्नरेबल ग्रुप्स का, दैट इज टू बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्ट एंड नेशनल कॉन्स्ट्रक्ट. नेशनली हम उनको रख सकते हैं, जैसे माइग्रेंट लेबर्स हो गए, तो जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं नेशनली भी उनको हम उसमें रख सकते हैं, या इकोनॉमिक बेसिस पर भी हम उनको वल्नरेबल की कैटेगरीज में रख सकते हैं. इसी तरीके से रिफ्यूजीज एंड स्टेटलेस पर्सन. सो there are 3 broad areas in which we can put all the vulnerable groups which exist today. That is on the physical basis, in physical, age-based, disease-based, stigma-based, on social basis, that is gender-based, caste-based, and on economic and national grounds, we can put the migrant laborers, refugees, stateless persons, ethnic communities also, जो ethnic और racial grounds पर भी discrimination होते हैं internationally, उसको हम ज़्यादा देखते हैं. So these may be the grounds, or these may be different groups in which we can put all the members of the vulnerable group for this purpose of understanding that who are the vulnerable groups and why they are vulnerable. Now, coming to their human rights, the basic rights that belong to them all. Those rights are, for example, all these rights which I am going to discuss with you are available to each group of the vulnerable person. Right to life, right to liberty, right to dignity, and right to privacy. जो पहला उनका इम्पॉर्टेंट राइट है वो उनका है जीवन का अधिकार, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार, उनका गरिमापूर्ण रहने का अधिकार, और साथ ही साथ उनकी निजता का अधिकार, जो उनकी प्राइवेसी है. सो फर्स्ट राइट विच ईच वल्नरेबल ग्रुप इज हैविंग एज अ ह्यूमन राइट इज देयर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, एंड राइट टू प्राइवेसी. With that, second right which they have is the right to equality. Equality which makes them free from discrimination. अगर discrimination होगा तो equality नहीं होगी, है ना. अगर उनके साथ equal treatment नहीं होगा, if they are not having the right to equal treatment, that would result in inequality. So the second right which every vulnerable group is having is the right to equality, समानता का अधिकार, समता का अधिकार. Then right to health is their fundamental human right. Right to education is their fundamental human right. And with this right to health, there are other rights which emerges, that is right to food and nutrition, right to housing and sanitation, right to quality water.
अगर हम बात करते हैं राइट्स की, तो ये सारे राइट्स जो है ना हेल्थ से जुड़े हुए हैं, ये सारे राइट्स उनकी पॉवर्टी से जुड़े हुए हैं कि उनको फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, उनको हाउसिंग सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी बड़ी बड़ी हैं हमारे मेट्रो सिटीज में, चाहे वो मुंबई हो, कैलकाटा हो, तो वहां पे इस तरीके का जो क्वालिटी वाटर है, साफ पानी जिसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, that is not being made available to this group of the person. So right to housing, sanitation, right to quality water, right to participation. राइट टू पार्टिसिपेशन किस चीज में होना चाहिए? बिकॉज दे आर ऑल सेट टू बी द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वो हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमारे जो नागरिकता वाले जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमें अपनी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे, so this right to participation is also their fundamental human right. Right to information is their human right, and all the rights which are available to me, to you, and to every citizen, those all rights are available to these vulnerable groups person. उनको भी ये सारे अधिकार प्राप्त हैं जो हमें और आपको प्राप्त हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें अपने किस अधिकार की है इस समय, हम उस पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मालूम करना है कि सरकारी संस्थाओं में किस तरीके से एडमिशन हो रहे हैं, किसको नौकरी मिल रही है, किसका सीवी क्या है, किसको क्या सैलरी मिल रही है, मैं राइट टू इंफॉर्मेशन में ये निकालूं। लेकिन एक माइग्रेंट लेबर, एक बच्चा, एक एजेड पर्सन जिसको इन चीजों की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको इस अधिकार का उतना ज्यादा महत्व नहीं है, जबकि ये अधिकार उसके पास भी है, ये अधिकार उसके पास भी है। उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? राइट टू हेल्थ की जरूरत है, राइट टू इक्वालिटी की जरूरत है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जरूरत है, राइट टू डिग्निटी की जरूरत है, राइट टू प्राइवेसी की जरूरत है। So the rights are available to each and every individual citizen as a human being. All the human rights are made available for the human beings, but which right is mostly required by the vulnerable groups includes their right to health, food, nutrition, housing, and at the same time education, equality, and dignity. So who has to protect the rights of these groups? किसको प्रोटेक्ट करना है इन राइट्स को? This is one of the important point. So if we see that at international level, we find that United Nations, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसमें आप अगर देखेंगे तो you will find that the United Nations and its special agencies, they have all brought many conventions, declarations, and many policies are there. चाहे वो उसकी स्पेशल एजेंसीज हो, NGOs हो इंटरनेशनल लेवल पे, एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, दे हैव कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द these groups of the persons as their human rights. They have taken the lead and done groundbreaking work also, original work. अलग अलग जो उनके संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, जैसे आप यूनिसेफ को अगर देखेंगे, बच्चों के हित में उन्होंने बहुत काम किए हैं, बच्चों के लिए बहुत से पॉलिसीज बनाए हैं, बहुत से प्रोग्राम्स बनाए हैं, सारी चीजें हैं। सो you will find that the United Nations at international level has done a groundbreaking and original work for the persons of these groups who belong to the vulnerable group. What for the protecting of their different human rights. And at international level, we find a lot many conventions which have been adopted by the United Nations in order to protect the human rights of the vulnerable groups. And these international instruments are general as well as specific. जब हम general की बात करते हैं तो वो सभी के लिए लागू होती हैं, एक समान लागू होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने राइट्स की बात कहा, अगर राइट टू लाइफ एक वल्नरेबल ग्रुप के व्यक्ति का है तो मेरा भी है, तो इस तरीके का राइट जहां भी मिलेगा वो एक जनरल लाइक राइट होगा। लेकिन एक स्पेसिफिक राइट्स भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इंटरनेशनली आए हैं, जैसे for example, if we talk about the rights of the persons with disability, rights of the persons of the women, rights of the children,
तो ये स्पेसिफिक राइट्स हैं विच आर अवेलेबल ओनली टू दोज ग्रुप्स ऑफ द पर्सन. So if we find that the general instrument international level, that is UDHR, Universal Declaration of Human Rights, जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई 1948 में, that is said to be a Bible on the rights of human being without any discrimination, that all the rights are available to everyone. Each one is entitled to enjoy the universal human rights. और उसमें 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें सभी में उनके अधिकारों की बात की गई है. और खास करके जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे कि वल्नरेबल ग्रुप्स के कौन से राइट्स हो सकते हैं, वो सारे अधिकार इस ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. देन besides this UDHR, there is another 2 covenants which are also available generally to all the people. इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम ICCPR कहते हैं, जिसमें उनके जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके बारे में बात की गई है. और साथ ही साथ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICESCR, जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है. ये ज्यादा से ज्यादा उन राइट्स को फोकस करती है जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, दैट दे विल बी हैविंग द इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशली दे विल बी ब्रॉट इन द मेन स्ट्रीम, दे हैव ऑल द कल्चरल राइट्स, दैट इज different minorities may be there, different languages may be there, and they will have the equal rights with the other human being. So international covenant on civil on this economic, social and cultural rights, that is more important for the persons of the vulnerable group. However, the first convention, that is International Covenant on Civil and Political Rights, give them all the rights which a citizen is having in a democratic nation. तो उसके civil rights क्या हैं, उसके political rights क्या हैं, how they will get the political justice, how they will participate in their governance, जो उनकी governance चल रही है उसमें कैसे participate करेंगे, उनके civil rights क्या हैं. So these 2 covenants are there which also are of general nature and which are available to all the persons, and these 2 covenants have guaranteed the rights to sustainable livelihood, कि किस तरीके से वो अपनी livelihood में रह सकते हैं, किस तरीके से sustain कर सकते हैं as a human being. These 2 covenants provides and they guaranteed all the human rights to sustain their livelihood and the social, political, economic development for all the persons, especially of the disadvantaged, especially of those who are deprived of their rights, especially for those who are coming in the category of the vulnerability. तो उन सभी के लिए ये दोनों जो कवेनेंट्स हैं ये अवेलेबल हैं इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. एंड दीज 3 UDHR, ICCPR, ICESCR, these 3 makes the बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स उसका पार्ट है, और इन तीनों को मिलाकर ऐसा कोई राइट नहीं है जिसकी हम चर्चा करेंगे और जो अलग से किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है. सो इसमें सारे वो अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी एक कॉमन व्यक्ति को उसकी लिवलीहुड के लिए, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. और अगर ये सब चीजें नहीं है तो उनको एक डिसएडवांटेजेस जो पोजीशन मिल रही है उसमें ये जो कवरेंट्स हैं ये हर व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं, दैट दीज आर देयर ह्यूमन राइट्स. Now coming to the specific conventions on the rights of the different types of the vulnerable group. So first there is a convention on the rights of the child. This was a convention on the rights of child, also known as the CRC, and this was adopted by the United Nations in 1989. Many of the countries are the signatory of this convention, and this convention puts the obligation on the state parties. यहाँ पर स्टेट पार्टीज का मतलब क्या है? नेशन वाइज. जैसे इंडिया इज ए नेशन, इज द स्टेट पार्टी एट यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पे स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक नहीं बल्कि इंडिया की बात हो रही. तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंडिया इसकी सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है.
तो इस कन्वेंशन के द्वारा एक ऑब्लिगेशन इंडिया पर जो दिया गया है, और इस तरीके से और भी कंट्रीज जो इसकी पार्टी हैं, so this convention puts an obligation on the state parties to respect and to ensure the rights to each child within their jurisdiction. Jurisdiction means in their country, in their area, जहां पर हम गवर्न होते हैं इंडिया में, उसमें सारे देश में उनके राइट्स को, चाइल्ड के राइट्स को रेस्पेक्ट करे और एंश्योर कराए दैट दीज आर देयर ह्यूमन राइट्स. व्हाट आर देयर ह्यूमन राइट्स? दैट इज the protection and care that is necessary for the well-being of the child, his or her, चाहे वो लड़की है या लड़का है, equally उनको उनके राइट्स को, जो उनका वेलबींग है, जो ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, that has to be protected and cared by the state parties. The state parties have further to ensure that the child is protected against all forms of the discrimination or punishment. उसे किसी तरीके का कोई दंड ना हो, उसे किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ये एंश्योर कराएगा that the child is protected from this discrimination and punishment. Further, the state has to ensure that the child is protected without any discrimination of any kind. किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फैमिली में ही अगर दो बच्चे हैं, उसके बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और कोई इंडिविजुअली आ रहा है कि ये हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट का वायलेशन है, then the case can be lodged against, and whether his or her parents or the legal guardians are coming from any race, any caste, any color, मतलब कहीं से भी हैं, किसी भी ओरिजिनल के हैं, किसी भी ओपिनियन के हैं, किसी भी देश के हैं, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनका स्टेटस क्या है, इस सब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि बच्चा ही एक क्राइटेरिया है कि उसकी वेलबींग को देखना है, उसी बच्चे के केयर करनी है, उसी बच्चे के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, दैट देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. देन द स्टेट हैज टू रिकॉग्नाइज दैट द चाइल्ड ऑफ the right of the disabled child to take special care. अगर कोई बच्चा है और वो डिसेबल्ड है तो उसके लिए स्पेशल केयर देखना वो अपने आप में स्टेट का काम है. And the state has to take that the mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life. एक अच्छी लाइफ वो एंजॉय कर सके, एक डिसेंट लाइफ एंजॉय कर सके, इसके लिए कानून बनाने, इसका स्टेट पार्टीज के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है इस कन्वेंशन के अंदर, वो ये नहीं है कि स्टेट में जो ऑफिशियल्स हैं वो एक एक घर में जाएंगे और एक एक बच्चे को देखेंगे. नो, it simply means that the state has to make the laws, the rules, the policies to ensure that the rights of the children are protected against discrimination, against any punishment. Special care is being given to the child which need special care, either by being disabled mentally or physically, and to ensure the dignity of the children, to promote their self-reliance, कि वो अपने ऊपर किस तरीके से रिलाई करें, उसको प्रमोट करेंगे, to facilitate the active participation of the children in the community, and to protect the child against all forms of the exploitation. जैसा कि मैं बता रही थी कि जो बच्चे हैं एसोसिएटेड माइग्रेंट हैं, वो एक्सप्लॉइट होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं बच्चों के साथ, ये सब चीजें जो है उनके जो चाइल्ड वेलफेयर है उसकी प्रिजुडिशियल है. सो द स्टेट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. किसी तरीके का भी कोई शोषण नहीं उनके साथ किया जाए, इस तरीके के कानून बनाए जाएंगे. And at national level, the rights of the child are mentioned in the Constitution of India in Part 3 as the fundamental rights. Particularly, अगर हम Article 15 Clause 3 को देखते हैं, then law special provisions can be made for the children. बच्चों के लिए special provisions बनाए जा सकते हैं और उसमें किसी तरीके का ये नहीं कहा जाएगा कि केवल बच्चों के लिए क्यों बनाए गए हैं, बड़ों के लिए क्यों नहीं बनाए गए हैं. That would not result into discrimination or inequality. So special provisions can be made for the children under Article 15(3). उसके साथ 21 में, Article 21 में लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता है. 21A में उनको राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, बच्चों को कानून बना है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years of age, उनको सभी अधिकार मिले हुए हैं. साथ ही साथ आर्टिकल 23 है वो एक फोर्स लेबर की, एक बॉन्डेड लेबर की या
एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, इस सबको वो एबॉलिश करने की बात करता है कि एक एक्सप्लॉयटेशन जो बच्चों का होता है दैट शुड नॉट बी देयर, दिस इज देयर ह्यूमन राइट। एंड आर्टिकल 24 अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक बच्चों को एक हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने से, 14 ईयर्स की जो नीचे के बच्चे हैं वो उनको रोकता है कि एक चाइल्ड लेबर इस तरीके से ना हो। और चाइल्ड लेबर नहीं होने का और रोकने का सीधा पर्पस ये है दैट if the children will not be engaged in the factories, mines or the hazardous employment, then up to that age they will be going to the schools, वो पढ़ेंगे, वो अपने को डेवलप करेंगे। So this child labor is also abolished, and article 24 of the constitution provides for these rights to the children. And besides, there are obligations on the state to make laws for the protection of the health of the child, education of the child, safety and security of the child in part 4 जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी इस तरीके की बातें की गई हैं कि बच्चों को उनके अधिकार कैसे प्राप्त किए जाएं, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, उनकी एजुकेशन को देखा जाएगा, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत से कानून बनाने की बात संविधान में कही गई और उसके अकॉर्डिंगली बहुत से ऐसे लॉज भी बन गए हैं जो बच्चों के लिए ही हैं। जैसे चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट बन गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया, हेल्थ के लिए बहुत से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं बच्चों की जो ठीक तरीके से देखभाल कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन थी, चाइल्ड राइट कन्वेंशन, उसमें जो भी प्रावधान थे, दोज प्रोविजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड into the national laws also, national programs, national policies। अगर हम बच्चों की बात करें तो स्कूल चलो, पढ़ेगी बच्ची तो जाएगी बच्ची, और मिड डे मील, ये इस तरीके की छोटी छोटी स्कीम्स और पॉलिसीज हैं। इसका सीधा जो एक मतलब है वो ये है कि जब बच्चों के लिए ये सुविधाएं होंगी तो वो स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, और जो उनका एक चाइल्डहुड है, जो एक वेलबींग है, वो उसको डेवलप किया जाएगा और वो एंगेज नहीं रहेंगे किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, लेबर क्लास में, या उनको जो न्यूट्रिशनल ग्राउंड्स पर, जैसे मैंने कहा, मॉर्बिडिटी और मॉरलिटी, जो उनकी मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है इंडिया में। तो जब प्रॉपर उनको खाना मिलेगा, स्कूल में शिक्षा मिलेगी, बच्चे वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, तो हेल्थ वाइज भी वो ठीक रहेंगे। और इस तरीके की सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट हाउ मेनी ऑफ दीज चिल्ड्रन and their parents are aware of all these schemes। कितने लोगों को पता है कि स्कीम्स है? बहुत से बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और एक कदम आगे बढ़ के उनको लैपटॉप भी दे दिए, उनको साइकिल्स भी दे दी, उनको और भी चीजें देने की कोशिशें की जा रही हैं। Maybe this is the political agenda, but at the same time these are the things which are benefiting the children। And here the point is that whether the real or the genuine children who are really in need of these things, whether they are getting these things or not। अभी कोविड के समय में आपने देखा कि सारा ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास गैजेट्स नहीं थे, जिनके पास लैपटॉप नहीं, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं थे, क्लासेस चल रही थी और वो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे थे। तो एक डिजिटल डिवाइड जिसको हम कहते हैं वो बहुत बड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को कुछ लैपटॉप दिए गए या कुछ इस तरीके के उनको स्मार्टफोन्स दिए गए, तो इससे क्या हुआ, दैट द गवर्नमेंट थ्रू देयर स्कीम्स, थ्रू देयर पॉलिसीज हैव ट्राइड टू ब्रिंग दीज चिल्ड्रन इन द मेन स्ट्रीम सो दैट they may also get their right to education, they may also be made informed what the other persons or other students as a children they are doing। तो ये जो policy program है, these are their human rights and these policies are just to make these rights available to the children। वो उनको available कैसे हो सकती है उसके बारे में कही गई है। तो ये एक दो उदाहरण मैंने आपको दिए, स्कूल चलेगा, बच्चा स्कूल पढ़ेगा, चलो आओ स्कूल पढ़ें, स्कूल, इस तरीके का जो बहुत सारे मिड डे मील इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं, these are all supporting their human rights। Then for elderly person at international level, though there is not a direct convention for the elderly persons, but there are certain principles which are available at the international level and which are being followed in many of the states।
So the set of the 18 principles which are available for the rights of the elderly person, they have been adopted by the General Assembly in 1991. And since then, you see, many of the governments, they are encouraged to incorporate these principles into their national programs, national laws, national policies. And these principles are basically related to the independence of the elderly person, their participation, their care, their self-fulfillment, and the dignity of the older person, basically. Dignity is very important right for the older person, like uh, access of many of the basic needs, access to adequate food, water, shelter, clothing, health care, through the provisions of making some income, family and community support, and other self-help. तो आप देखते हैं ना वो वृद्धावस्था पेंशन योजना बना दी सरकार ने, और इसी तरीके से उनके लिए फूड वाटर शेल्टर के लिए कुछ गवर्नमेंट के शेल्टर होम्स भी बने हुए हैं, ये हेल्थ केयर के लिए उनके लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं. So these rights which are available in the shape of the principles, these are incorporated by policies and programs also. And the further we see that these principles also speaks about to give them the opportunity to work, to have the access to the income generating opportunities, कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाए, उनको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जहां पे वो कुछ अपना काम कर सकें या वो कुछ अपनी इनकम जनरेट कर सकें, जो भी उनमें एक कहना चाहिए कि एक एबिलिटी है, जो उनमें गुण है, उसके अकॉर्डिंगली जो उनमें चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली दे कैन वर्क, दे कैन जनरेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर गेटिंग सम इनकम, बिकॉज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So they should be independent, and for that independence, they need to work and to have access to the income generating opportunities, to live in an environment that are safe and adaptable to the personal preferences and changing capacities. कि किस तरीके के माहौल में वो रह सकते हैं, किस तरीके की जरूरतें हैं उनकी, what are the preferences. So accordingly, principles speaks about that. Then they should be integrated in the society to participate actively in the formulation of the various implementation of the policies. कई बार होता है ना, घर के में वृद्ध जो रह रहे हैं, जो एल्डर पर्सन रह रहे हैं, उनको कहते हैं आप घर में रहिए, घर की देखभाल करिए, we are going somewhere. So they don't have any social gathering, they have not any social participation, they are not integrated in the society. But the principle says that they should be allowed and they should be given the राइट टू इंटीग्रेट इन दी सोसाइटी. तो इस तरीके के बहुत से जो वृद्धावस्था क्लब खोलने की बात कही गई है, तो कुछ सोसाइटल लेवल पे खोले हैं, कुछ पॉलिसीज इस तरीके के चल रहे हैं. सो डिफरेंट पॉलिसीज दैट आर डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर वेलबींग, so that they may share their knowledge and skills with the younger generations. Their experience may benefit the family and the community. They may have the access to health care, they may have the access to social and legal services, they may have to enhance their autonomy and protection. They may also have the access to the life which may live with the dignity, security, free from any type of the exploitation from the physical abuse, exploitation from the mental abuse. So all these principles are the part of this set of principle which was adopted in 1991. 91 से ये जो principles हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं उस पे उन्होंने अपने यहाँ इस तरीके के कानून बनाए. इन प्रिंसिपल्स के साथ ही साथ कुछ एक्शन प्लान आर आल्सो देयर एट द इंटरनेशनल लेवल. फॉर एग्जांपल मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002, that is there. Vienna plan of 1982, that is there. Macau outcome of the document plan for aged persons 2007, that is all there. तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं. और इंडिया में अगर हम आते हैं, then we find that in India our constitution from the very preamble, जो उसकी उद्देशिका है, उसी में कहा गया है जस्टिस की बात कही गई है, इक्वालिटी लिबर्टी की बात की गई है, डिग्निटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है. So all these are the preambular objectives which are available to every person, and every person includes the aged person also, besides right to equality under Article 14. Article 41 is important, which confers an obligation on the state to
give some public assistance in cases of the old age, sickness and disablement. तो इस तरीके के कानून बनाए जाएंगे. And on the basis of this Article 21, in India we find that the Senior Citizen Act has been passed in 2007 and now it is amended in 2019. तो जो सीनियर सिटीजन है उनको 2019 में एक एक्ट बनाया गया कि उनको मेंटेन करने के लिए ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों की है. उनके बच्चों में न सिर्फ उनके बॉर्न जो बेटा बेटी हैं बल्कि उनके सन इन लॉ एंड दिस डॉटर इन लॉ, दे आर ऑल्सो देयर who are said to be the children who have to maintain the senior citizens. और किस किस तरीके के अधिकार हैं वो पूरे 2019 के इस अधिनियम में दिए गए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए. उसमें पार्टिसिपेशन भी है, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी है, उनकी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है. तो ये सारे अधिकार उनको प्राप्त है. Then another specific convention which we find is related to the rights of the disabled person. 1975 में एक डिक्लेरेशन इंटरनेशनली की थी यूनाइटेड नेशंस इन राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन. उसके बाद फिर वर्ल्ड एक्शन प्रोग्राम आया जो दैट वाज रिलेटिंग टू द डिसेबल्ड पर्सन. देन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 जिसको CRPD हम कहते हैं. तो ये CRPD जो 2006 में आया, this is an umbrella type of the convention in which all these declarations, actions जो पहले से चल रहे थे उन सबको incorporate करके एक convention आई. And that convention can be said to be a paradigm shift for the disabled persons because this convention sees this disabled person not as the object of charity but as a subject with rights. पहले तो क्या था ना, जब डिसेबल्ड के लिए जो डिक्लेरेशंस या उनके लिए अगर कोई कानून बनाया जाता था तो ये था कि एक तरीके की सिंपैथी दिखाने के लिए, उनके साथ एक सिंपैथाइज होने के लिए, एक सद्भावना के रूप में कि भाई ये भी समाज में एक लोग हैं और इनको भी कुछ दे दिया जाए. बट नाउ दिस CRPD दैट स्पीक्स ऑफ द राइट्स कि वो भी एक सब्जेक्ट है लाइक अदर ह्यूमन बीइंग्स. द डिसेबल्ड पर्संस आर आल्सो इक्वली ह्यूमन बीइंग and they are also having their rights, so they should not be treated as an object कि गाय भैंस की तरीके से ट्रीट कर लिया जाए कि हाँ इनको भी कुछ दे दिया जाए, but as a subject, as a human being. So this is a great shift of the CRPD which confers some specific provisions for the rights of the disabled persons. Right to equality, right to education, right to employment, right to services in the states जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, राइट टू ट्रांसपोर्टेशन, राइट टू एक्सेस इन मैनी ऑफ द फैसिलिटीज. तो इस तरीके के बहुत से जो राइट्स हैं वो सब इस कन्वेंशन में दिए गए हैं. और अगर वो राइट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो उसमें कौन सी कमिटीज या कमीशन काम कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं. So all this is the part of the International Convention on the Rights of the Persons with Disability. Then in India, if we find that what are the laws, then in 2016 the Rights of the Person with Disability Act came. 1995 में भी एक था हमारे पास People with Disability Act, लेकिन उसमें राइट्स मिसिंग थे. उसमें राइट्स पे चर्चा नहीं की गई थी. उसमें थोड़े बहुत रिजर्वेशन और कौन डिसेबल्ड होगा इसको ज्यादा दर्शाया गया था. लेकिन जब हम 2016 में हमने जो लॉ बनाया, हमारे पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, दैट इज the name of the very act is right of the person with disability. वो केवल rights की चर्चा कर रहा है कि क्या क्या rights होंगे. The reservation in educational institution, reservation in services, accessibility to the facilities, accessibility in the transportation, accessibility to the infrastructure. साथ ही साथ उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा. So all this is the part of the act of the disability law. और साथ ही साथ जो 1995 में 7 तरीके की 7 points of the disabilities were there, 7 kinds of the disabilities were there. Now it has been enlarged to include 21 types of the disability. 21 तरीके के लोगों को benchmark disability में उसमें रखा गया on the basis of their physical disability, mental disability, on the basis of the different types of the learning capacity. अलग अलग तरीके की जो mental disability हैं उनको भी इसमें रखा गया. एसिड अटैक वाले जो विक्टिम्स हैं उनको इसमें रखा गया. जो लोकोमोटर वाले हैं, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, चाहे वो आंख से या उनके कोई शरीर के कोई अंग अगर नहीं है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 21 टाइप्स ऑफ द डिसेबिलिटी व्हिच आर गेटिंग द बेनिफिट
of this 2016 enactment passed by the Parliament of India. That is the law which has been made on the basis of this Convention on the Rights of the Person with Disability 2006 at international level. जो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है उसके आधार पर इंडिया में भी ये लॉ बनाया गया। केवल लॉ ही नहीं, बहुत से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज भी हैं गवर्नमेंट की जो डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए चल रहे हैं, जैसे व्हील चेयर प्रोवाइड करना, उनको जो अगर सुनने में कोई कमी है, उनको अगर जो हियरिंग इनकैपेसिटी या इम्पेयरमेंट कहते हैं, तो कान की सुनने की मशीन सरकारी अस्पतालों से मिल जाती है, चश्मे बनते हैं उन लोगों के अगर विजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, और अगर हाथ कटा है या पैर कटा है तो उनको उस तरीके से आर्टिफिशियल लिम्स भी दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। इंटीग्रेटेड एक एजुकेशन पॉलिसी आ गई है कि जो स्कूल हैं इन लोगों के, उसमें गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है। लो फ्लोर बसेस आ गए हैं, जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ये एक्ट कहता है कि ये सरकारी बिल्डिंग्स जितनी हैं उन सब में लिफ्ट हो या रैंप्स बने हो, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियां तो नॉर्मल लोगों के लिए हैं। अगर कोई लोकोमीटर से हैंडीकैप है, अगर वो चल फिर नहीं सकता है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, देन the buildings should be disabled friendly. So these are all the policies and programs which the government is doing, and which I suppose that the disabled persons, they must be aware about. If they are not, then you as the participant of this workshop, you should make them aware that these are the facilities for them and they can avail these facilities. So for disability, all these programs, international governance, international convention, laws, they are all available. Then come to the specific provision and declarations for the rights of the women. At international level, there is one convention which is also known as the Bible on the rights of the women, CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. It is of 1979. And this convention defines discrimination against women in 3 types. कि discrimination कैसे किया जा सकता है? Discrimination by making any distinction, discrimination by making any exclusion, or discrimination by restricting the women on the basis of sex. कि सेक्स के आधार पर ना तो कोई डिस्टिंक्शन किया जाए, ना ही उसको एक्सक्लूड किया जाए, और ना ही वो जहां पार्टिसिपेट कर रही है किसी चीज में तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए. If there would be any of these 3 things, distinction, exclusion, and restriction on the basis of sex, then this would be considered as discrimination, and this convention provides the provision that there should not be any discrimination. So because you know that this discrimination impedes the women in their human rights and the fundamental freedoms in the political field, in the economic field, in social field, in cultural field, in civil field, and many other things. हर चीज में अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बैन करने की बात, उसको एलिमिनेट करने की बात कही गई है इस कन्वेंशन ऑफ 1979 known as CEDAW. So state के ऊपर obligation है that the state has to take all the appropriate measures. They may come with the legislations also to ensure that the women are given full development and advancement in the participation of their country's work. The state has to guarantee that the fundamental freedoms of the women should be given on the basis of equality with that of the men. अगर किसी व्यक्ति को मेल मेंबर को कुछ दिया जा रहा है तो फीमेल मेंबर को भी वो इक्वालिटी दी जाए. And to suppress all forms of the trafficking in women, exploitation and the of the women, the prostitution of the women. तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी जो कहना चाहिए प्रोविजन है वो दिए गए हैं, जैसा कि अभी मनोहर सिंह जी कह रहे थे, वेदर, और शायद किसी और ने पूछा था कि whether this prostitution would come in this category or not. So CEDAW says that if they are exploiting on the basis of their economic dependency, if they are in the business of the prostitution or trafficking, then this has to be suppressed. The state has to make the laws, the state has to make the policies that these type of the things should not remain, because they have signed, they have the signatory and ratified the CEDAW. And to affirm also that the women's right to not to discriminate in the education, in employment, in social and economic activities are to be there. They should be given their right to decide freely and responsibly about
the number on spacing of their children, जो मैंने कहा कि reproductive rights जो women के हैं उस पर भी उनको कोई अधिकार नहीं मिल पाता vulnerable group में, तो सीधा कहता है कि कितने बच्चे होंगे, उनका स्पेस टाइमिंग क्या होगा, कितने समय के बाद होंगे, ये सारी चीजें freely and responsibly women has the right to decide over, to think over, and to have the access to information, to have the access to education, to have the all the means which make them enable these fundamental human rights. So the CEDA is said to be a very Bible of the human rights for women, which makes them that there shall not be any discrimination. Besides CEDA, the constitutional provisions in India are also there, which makes specific provisions and specific enactments right from Article 15(3) to the Constitution of India. We find many of the laws are there which are available for the women, चाहे वो domestic violence के लिए लॉ बनाया हो, डाउरी के विरोध में लॉ बनाया हो, या इसी के साथ ही साथ ट्रैफिकिंग इन विमेन और गर्ल चाइल्ड के लिए लॉ बनाया गया हो, पॉक्सो बनाया गया हो, तो बहुत सारे ऐसे लॉ बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ विमेन के लिए स्पेशल स्कीम्स भी बनी हुई हैं, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में देखें, अदरवाइज भी देखा जाए तो बहुत सी विमेन के लिए स्कीम्स बनी हैं which are available so that they may enjoy their fundamental human rights. Then migrant persons as a vulnerable group, we have the International Convention on the Protection of the Rights of the Migrant Workers and the members of their family also. तो migrant workers के साथ जो associated workers हैं, migrants हैं, उनके लिए भी international level पे convention बनी है, और उस convention में कहा गया है that these migrants workers, they will be enjoying the full equality of treatment with the nationals of the state in employment. Employment पे उनको एक equal treatment दिया जाए in relation to their access for social and health services, in reference to their requirements and the participation in the respective schemes. तो ये सारी चीजें उनको दी जाए माइग्रेंट वर्कर्स को। इंडिया में भी 1979 का लॉ बना हुआ है, और ड्यूरिंग पैंडेमिक इफ यू हैव सीन दैट दीज माइग्रेंट्स विद इन इंडिया व्हेन दे वर क्रॉसिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हेन दे आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, लॉस तो बहुत थे, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से दे सफर्ड अ लॉट। उन्होंने इतनी ज्यादा परेशानियां झेली इस समय पे एज माइग्रेंट जितना किसी और ग्रुप ने शायद नहीं उसको देखा होगा। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवरसेल्व्स, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू मेक देम अवेयर दैट व्हाट आर देयर राइट्स, हाउ दे कैन अवेल देयर राइट्स, व्हाट आर द रेमेडीज व्हिच दे कैन अवेल, बिकॉज द लॉ इज वेरी मच देयर। Then for transgender persons, there is some Yogkarta principles at international level. We have specific legislations on the rights of the transgenders in India, that is Transgender Person Protection of Rights 2019. 2019 में वो लॉ बनाया गया ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जहां पर उनको एक थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखते हुए उनको वो सभी अधिकार दिए गए हैं जो एक कॉमन मैन के लिए हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मैं न्यूज में भी देख रही थी कि एक पायलट who belongs to this particular sexual minority, he was being not allowed to go for the air pilot, but the court has given, and also the ministry has given the directions to the particular private airlines that they cannot deny, they cannot discriminate the person. तो डिस्क्रिमिनेशन जहां पर हो रहा है ट्रांसजेंडर के साथ, इस तरीके के लॉज भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, एंड नाउ दे आर आल्सो कमिंग in the same scenario as the other persons are coming. इसी तरीके से HIV/AIDS एक्ट 2017 में बनाया गया, उसमें भी इक्वालिटी की बात की गई है, because if you see discrimination, if you see vulnerability, the major cause is the discrimination. Discrimination may be on different ground. So first thing is that there should not be any discrimination, but they should be treated equality. Equality of treatment is the first solution for all these persons who are coming to the vulnerable group. And for that, we see that many commissions are also working, whether it is for the commissions for the women, commissions for the children, commission for the SCs, commission for the STs. They all are working for the upliftment, for giving the equality to
delete and to repeal this discrimination against these vulnerable groups of the persons. And we find that nationally, our Constitution of India and the specific laws, they all provide for the rights and the protection of these rights and freedoms of the vulnerable group. Internationally, we have seen that there are many instruments which are ensuring the human rights of the vulnerable group to protect them. But the awareness about the rights, that lack, and the lack of the strict implementation of these laws and policies, population explosion also, the social mindset, they are all equally responsible for their status to remain vulnerable. So as an academician and torch bearer of the society, you all, it becomes your duty, it becomes our duty to get them know about their rights, as to what are their rights, how they can enjoy their rights, how they can get the remedy for their rights. Only then this lecture would be a successful lecture. Otherwise, there is nothing to say that there are many documents which are available in black and white. But how this black and white may bring the colors in the life of these vulnerable groups, this becomes important. And these colors can be brought by all of us who are aware about their rights, who themselves are not aware, but we are aware. We can bring these colors to their life, from bringing that from black and white to a colorful rainbow. So with these words, I stop here, and I would be happy if there are questions on any of the points, because I have not discussed in detail many of the provisions due to the shortage of time, but I have given you the idea that at international level, national level, many laws, instruments, programs, policies are available. Thank you.